Namaskar friends. In this session, you will learn about the subject Basic Electrical Engineering, Unit number 2, AC Circuits. The major topic is 3-phase AC power measurement. Requirement of 3-phase AC power measurement. Power measurement in an AC circuit is measured with the help of a wattmeter. The power is nothing but the product of voltage, current and power factor in AC supply. Again, this cos phi means power factor depends upon the angle between phasor of voltage and current. A wattmeter is an instrument which consists of two coils called current coil and potential coil. See in below diagram, upper one is the current coil and lower one is the potential coil. The current coil having low resistance is connected in series with the load so that it carries the load current. The potential coil having the high resistance is connected across the load and carries the current proportional to the potential difference. For measuring the power in three-phase or polyphase system, more than one wattmeter is required or more than one readings are made by one wattmeter. If more than one wattmeter is connected for the measurement, the process becomes convenient and easy to work with instead of taking various readings with one wattmeter. The number of wattmeters required to measure power in a given polyphase system is determined by Blondel's theorem. According to Blondel's theorem, when power is supplied by the K wires, K is the numbers, K wires AC system, the number of wattmeters required to measure the power is 1 less than the number of wire. That means K minus 1 regardless the load is balanced or unbalanced. Hence, 3 wattmeters are required to measure the power in a 3-phase 4-wire system, whereas only 2 wattmeters are required to measure the power in 3-phase 3-wire system. एकदम सिंपल है फ्रेंड्स. अगर 3-phase 4-wire सिस्टम है तो टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितने हुए 4. दैट मीन्स K इज इक्वल टू 4. नाउ फॉर दिस सिस्टम अगर हम पावर मेजर करना चाहते हैं तो हमें कितने वोटमीटर चाहिए K minus 1. दैट in this case K is 4, so 4 minus 1, that means we need 3 wattmeters. The methods of 3-phase AC power measurements. There are total 3 methods of 3-phase AC power measurement. One is single wattmeter method, 2 wattmeter method and 3 wattmeter method. The single wattmeter method is not reliable and in practical not widely used. The 3 wattmeter method is also not widely used by analog meters. Hence, the 2 wattmeter method is described further. Now see in this single wattmeter method, let us understand the basic concept first. It is very obvious to measure the power of only a single phase and to multiply this by 3 to become the total power of installation. See in this case, total power is equal to 3 times the reading of a wattmeter. इस सर्किट में हम only single wattmeter any of the phase, कोई भी एक फेज में हम कनेक्ट करेंगे. जैसे कि इस डायग्राम में एक वोटमीटर आर फेज में कनेक्ट किया हुआ है. नाउ अभी जो ये वोटमीटर जो भी रीडिंग दिखाएगा वी विल मल्टीप्लाई दैट रीडिंग बाय 3 एंड इट विल गिव द टोटल पावर मेजरमेंट. सो total power is equal to 3 times of reading of the wattmeter. This only works as long as the voltages between themselves and the loads from 3 phases are exactly the same. That means this star or delta configuration must be in balanced condition. ये तो हमने पहले ही बैलेंस कंडीशन वाले लेक्चर में देखा हुआ है कि अगर स्टार लोड और डेल्टा लोड जो भी लोड दिया हुआ है वो बैलेंस कंडीशन में होगा तभी हम ये सिंगल वाटमीटर मेथड यूज कर पाएंगे. अदरवाइज इट विल गिव्स फॉल्स रीडिंग. It doesn't matter whether or not the neutral point of the load is connected to the neutral or that the load is in
delta configuration. The objection to this method is that without additional measurements, one never can be sure that the three voltages are equal. मतलब कि बिना मेजरमेंट किए पहले हम ये नहीं कह सकते कि ये थ्री फेज में सब ऑल थ्री फेज वो इक्वल होंगे. एंड देर इज ऑल्सो अ रियल चेंज दैट द लोड्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल. ये भी हो सकता है कि जो थ्री फेज लोड दिया हुआ है उसमें थ्री फेज के जो रेजिस्टेंस या वाइंडिंग्स, दैट मीन्स जो इम्पिडेंस रहता है हर एक फेज में, तो वो इम्पिडेंस भी सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो ये मेजरमेंट उस पर भी डिपेंड रहता है. दिस ऑल कैन कॉज मेजरमेंट एरर्स दैट वुड नॉट नॉर्मली बी नोटिस्ड. To determine these additional measurements would be necessary. Therefore, this method is not advisable. 2 wattmeter method. It is very obvious to measure the power of two phases by 2 wattmeters in a three-phase system. Now see in this circuit diagram, there are two different wattmeters are connected in R phase and B phase respectively. And this can be represented by using phasor or vector diagram. In this method, reading of wattmeter W1, that means the R phase का जो wattmeter है उसका reading W1 is equal to V into RY into IR into cos phi 1. That means the voltage between R and Y phase, that is line to line voltage, then multiply by the current passing through the R phase and the power factor of that. So it is nothing but the VL into IL into cos 30 plus 5. This 30 plus 5 can be represented in vector diagram. You can refer the vector diagram for this 30 plus 5 angle. Then reading of the other wattmeter W2 is equal to VBY multiplied by IB multiplied by cos phi 2. That means the voltage between phase B and phase Y multiplied by current of the phase B and multiplied by the power factor of that. So it is equal to VL IL cos 30 minus 5. The total power is equal to W1 plus W2. ये दोनों का हमें vectorial summation करना है. So as per this derived equation, total power P is equal to, at last we get total power P is equal to root 3 VL IL cos phi. If we get 10 phi, that means if you want to measure the power factor, then for that we first have to find out the angle phi. So for that we can use this equation, 10 phi is equal to root 3 into W1 minus W2 divided by W1 plus W2. Effect of power factor on wattmeter readings in 2 wattmeter method. Here W1 is equal to VL IL cos 30 plus 5. W2 is equal to VL IL cos 30 minus 5. Thus the readings W1 and W2 will vary depending upon the power factor angle 5. Now you can refer this table for more details that represents different power factor. Power factor, that means cos phi is equal to 1, cos phi is equal to 0.5 and cos phi is equal to 0. So power factor at unity, power factor at 0.5 and power factor at 0 condition. See here, phi is equal to 0 degree, 60 degree and 90 degree respectively. So for more details in 2 wattmeter method, you can refer this table. Next is 3-phase wattmeter method. We earlier discussed that in a practical condition, in on-site condition, actually 3 different wattmeters, analog wattmeters, are not used in practical measurement, but instead now the latest instrument used directly for 3-phase power measurement is known as power analyzer or पावर लॉगर. सी अगेन इस इंस्ट्रूमेंट में वोटमीटर जैसी ही कंडीशन है. जैसे वोटमीटर में हम मेजर करते हैं तो हर वोटमीटर में 2 कोयल रहती है, वो हमने पहले डिस्कस किया. वन इज पोटेंशियल कोयल एंड सेकंड वन इज करंट कोयल. करंट कोयल है वो पर्टिकुलर लाइन और फेज का करंट मेजर करेगा और जो पोटेंशियल कोयल है वो उसका
लाइन टू लाइन वोल्टेज मेजर करेगा। सो आप ये फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये जो 3 दिया हुआ है दैट इज CT, उसको बोलते हैं CT, दैट मीन्स करंट ट्रांसफॉर्मर दैट विल मेजर द करंट ऑफ ईच फेज। उसके पास में दैट मीन्स ये जो येलो कलर का इंस्ट्रूमेंट दिखाया है उसके एग्जैक्ट नीचे जो दिया हुआ है दैट इज द वोल्टेज मेजरमेंट प्रोब्स। हियर 4 वोल्टेज मेजरमेंट प्रोब्स आर गिवन बिकॉज अगर ये 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड होगा और अनबैलेंस होगा तो न्यूट्रल में से करंट फ्लो होगा, देन इन दैट कंडीशन वी मस्ट हैव टू मेजर द न्यूट्रल करंट ऑल्सो एंड वोल्टेज। तो उस टाइम पे हमें न्यूट्रल का वोल्टेज चाहिए। या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसी इक्विपमेंट से हमें सिंगल फेज लोड का मेजरमेंट करना है तो भी न्यूट्रल चाहिए। इसलिए 4 वोल्टेज प्रोब दिए हैं और 3 करंट प्रोब दिए हुए। अगेन हम करंट भी मेजर करेंगे, वोल्टेज भी मेजर करेंगे, और ये इंस्ट्रूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट ये वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट मेजर हो जाएगा और उसके बेस ऊपर पावर फैक्टर cos 5 मेजर हो जाएगा। तो वोल्टेज मेजर करेंगे, करंट मेजर करेंगे और पावर फैक्टर cos 5 वो डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट में कैलकुलेट हो जाएगा। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हर फेज़ का हमें पावर मेजर हो जाएगा और तीनों फेज़ का पावर टोटल करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट टोटल पावर मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली ये इंस्ट्रूमेंट 3 फेज पावर मेजर करने के लिए लेटेस्टली यूज़ हो रहा है। आपको अगर कोई क्वेरी है देन यू कैन email us to on bhavin.kanani@darshan.ac.in. For more details, you can refer our website www.darshan.ac.in.